Pastor Paul to start our new session with the book of Exodus. Yeah, good evening, everybody. It's late for you guys and a little early for me, but Yeah. आप सबको शाम का सलाम, लेकिन मेरे लिए तो वहाँ पर सुबह ही है. I'm very happy to be able to join you all again for another Pentateuch class. मैं बहुत खुश हूँ कि मैं दोबारा से आप लोगों को पेंटाटुक की जो क्लास है शरीयत की 5 किताबें, उसके लिए मैंने आपको ज्वाइन किया. I'm sorry I missed I think 2 weeks ago because I was traveling. 2 हफ्ते पहले मैं जो था वो सफर में था, कहीं गया हुआ था. My family and I went to Romania to visit my sister who was getting married. इनकी फैमिली एक शादी की तकरीब में जो कि इनकी बहन थी रोमानिया में, वहां पर गए थे उस शादी में शिरकत करने के लिए. But we are back now. और अभी ये अमेरिका में वापस आ गए हैं. And God is doing great things in Romania. खुदावंद रोमानिया में बड़ी तेजी से और बहुत बड़ा काम कर रहा है. And I trust that he's doing great things wherever you are. और मेरा ईमान है कि खुदावंद आपकी जिंदगी में भी बहुत काम कर रहा है. So let's start talking about the book of Exodus. आइए हम खरूज की किताब के बारे में सीखना शुरू करते हैं. So Pastor Assad mentioned that you finished up with the story of Joseph at the end of Genesis chapter 50. तो पास्टर असद ने मुझे बताया कि आपने यूसुफ की कहानी पर एहतमाम किया 50वें बाब पैदाइश की किताब से. And at the end of the book of Genesis, there's this phrase that Joseph says that I really enjoy. और पैदाइश की किताब के आखिर पर यूसुफ एक जुमला जो है, मुहावरा बोलता है जो कि इन्हें बहुत पसंद है. He says what you meant for evil, talking to his brothers, he says what you meant for evil, God meant for good. वो अपने भाइयों से कहता है कि जो कुछ तुमने बुराई करने का मंसूबा किया था उसे खुदा ने अच्छाई निकाली. And I think this theme of the evil that we think is happening, God turning for good, is something that continues in the book of Exodus. और वही बुराई जो कि खुदा ने अच्छाई में बदल दी थी, वो खरूज की किताब में भी वैसे ही जारी रहती है. So I think that today will probably just be in the first 3 chapters of Exodus. So मेरे ख्याल से आज हम पहले 3 खरूज के जो बाब हैं उन्हीं को कवर करेंगे. We're introduced to one of the founders and main prophets of God in Genesis, or in the Old Testament. पुराने अहदनामे में जो इनका सफर है और किसको इसने लिखा, आज मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा. So this book is important, and there's pictures of Christ and of our faith in this book throughout the book of Exodus. ये यीशु मसीह की तस्वीर भी पेश करती है ये बुक, और ईमान का भी जिक्र करती है. And sometimes maybe we can get caught up with the New Testament because it's so great and it's so rich. और कई बार इसमें हमें नए अहदनामे में भी इसका जिक्र मिलता है क्योंकि ये बहुत भरपूर है खुदा के कलाम से. And we see our Savior and what he did on the cross for us. और हम अपने निजात दहिंदा को देखते हैं कि जो कुछ उसने सलीब पर हमारे लिए किया. But what I think we'll learn as we go through the book of Exodus is how much there is about Jesus in the things that are taught here. और हम खरूज की किताब में यीशु मसीह के बारे में देखते हैं कि किस कदर ज्यादा मवाद जो है इस किताब में पाया जाता है. The pictures and the sacrifices and the prophecy that exists. वो तस्वीरें जो कि प्रोफेसी और कुर्बानियां जो हैं वो सारी इसकी मंजरकशी करती हैं. So let's get started in Exodus chapter 1. आए खरूज उसके पहले बाब से शुरू करते हैं. So all of the Israelites, all of Joseph's brothers and their families have moved down to Egypt. इस्राएल के बेटों के नाम जो अपने अपने घराने को लेकर यूसुफ के साथ मिस्र में आए ये हैं. And we see the names of all his brothers listed in the first few verses of chapter 1. पहले बाब की पहली चंद आयत में उसके सारे बेटों के नाम लिखे हुए हैं. And it says there are about 70 to 75 people that come down from Canaan, come down to Egypt. और वो कनान से तकरीबन 70 से 75 के करीब लोग वहां से निकल कर आए थे.
and they are given a place. Joseph picked a place for them all to be. और यूसुफ ने उनके लिए एक अच्छी जगह चुनी ताकि वो वहां पर रह सके। And it's a land called Goshen. और उस जगह का नाम जशन था। And it's interesting, this is maybe a side note, this name of the area called Goshen. और ये बड़ी जबरदस्त बात है कि जशन का इलाका जिसका मतलब है It's actually like a fertile place, a place, Egypt is a desert, but Goshen is actually a place of fertility and growth, and things are able to grow there. जशन जो था कि वो एक ऐसा इलाका था जहाँ पर बहुतायत थी हर चीजों की, सरसब्ज था, हर चीज कसरत के साथ पाई जाती थी वहां पर। And we can maybe see some imagery there between, the garden that God created for man, and then also the future promised land of where God will bring them. This is kind of maybe a glimpse of that. और ये इसकी भी मंजर कशी हो सकता है कि जो बाग खुदा ने शुरू में लगाया था, और ये उसकी भी एक मंजर कशी हो सकती है कि ये जगह जो थी वो उस जैसी थी। So we see all of Joseph's brothers and family moved down to Egypt. और हम देखते हैं कि यूसुफ का सारा खानदान जो था वो मिस्र में आ जाता है। Time passes and a new pharaoh, a new king comes to power in Egypt. टाइम जो है वो बदलता जाता है, गुजरता जाता है, तो नया फेरो जो है, फराउन, वो मिस्र में आ जाता है। And we see in verse 8 of chapter 1, it says, there rose a new king and he did not know Joseph. तब मिस्र में एक नया बादशाह हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था। पहले की 8। So Joseph was obviously a very influential person in the nation of Egypt. लेकिन मिस्र के अंदर यूसुफ जो था वो बड़ा नामवर, बड़ा मशहूर शख्स था। But this new pharaoh did not know Joseph. लेकिन ये जो नया बादशाह यानी फेरो जो था वो उसको नहीं जानता था। And maybe we can see, I'm sure that when you talked about the life of Joseph, you learned about the comparisons between his life and the life of Jesus. और मेरा यकीन है कि जब आपने यूसुफ की कहानी को पढ़ा होगा तो आपने यीशु मसीह और यूसुफ को देखा होगा कि क्या चीजें थी जो एक जैसी थी उनकी जिंदगी में। And maybe we could say the same thing about our world that we live in now. The new generations have come and people do not know Jesus. और जैसा कि आजकल हम कह सकते हैं कि आजकल की जो दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं, हो सकता है वो यीशु मसीह को ना जानते हों। So the Pharaoh did not know Joseph, and he looks at the Israelites and this land that they are able to live in. और वो लोग जो थे वो फेरो को नहीं जानते थे और वो वहां पर उस सरजमीन में रह रहे थे। And he sees that they are multiplying and they are growing and they are becoming stronger, and he gets concerned and starts to get worried about them. और वो परेशान और घबराहट का शिकार हो गए कि क्योंकि इस्राएली जो थे वो बढ़ रहे थे और दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे थे। If we let the Israelites grow too strong, then they could join our enemies and defeat us, the Pharaoh says. फेरो कहता है कि अगर ये मजबूत से मजबूतर होते गए, हो सकता है ये दुश्मन की फौज को ज्वाइन कर लें और हमें हरा दें। So he decides to do something about that. तो उसने एक मंसूबा तैयार किया इनके लिए। And it's interesting to think about the solution that he comes up with. और बड़ी हैरानकुन बात है जो उसने इस बात के फेरो ने जो इस बात का हल निकाला वो क्या था। His decision was to kill all the male Israelite babies. तो उसने जो लड़के जो पैदा हुए इस्राएल में उनको कत्ल करने का मंसूबा बनाया। I'm not so sure that was such a diplomatic way of handling this. तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई दोगलापन जैसा वो करना चाह रहा था। इससे क्या हो सकता था? So the Israelites are a nation of history and a nation of like heritage. इस्राएल जो है ये एक ऐसी कौम है जिसके अंदर बड़ी तरीक पाई जाती है और ये तरीक को रकम करते हैं। If Pharaoh went to them and said, we have honored you and we have helped you and made it so that you did not go, die, maybe we can help each other and we can, be peaceful with one another. अगर फराउन उनके पास डायरेक्ट जाता और कहता कि हमने तुम्हारी मदद की थी पुराने वक्तों में और सीधे तरीके से उनके साथ बात करता तो हो सकता है कि वो मान जाते।
But instead, he decided to make them slaves and to make them work hard, and then eventually to kill all the male babies that are born. तो फराउन का जो मंसूबा था, उसने कहा कि इनसे सख्त मेहनत कराई जाए, सख्त कड़ी काम लिया जाए, और इनके जो लड़के पैदा होंगे उनको भी मार दिया जाए. And we see an interesting way that the Israelites respond to that order from the Pharaoh. और हम देखते हैं कि किस तरह से इसराइल ने जो ये अमर शुरू किया गया था, उसके जवाब में उन्होंने क्या किया. In verse 17 of chapter 1, 17वीं आयत पहले बाब की, we hear about the Hebrew midwives. So the Pharaoh told the midwives, he said, if a male child is born, you are to throw it into the, you are to kill that boy, the baby boy. फेरो ने उन दाइयों से कहा कि अगर लड़का पैदा हो तो तुम्हारा काम है उसको मार देना, उसको कत्ल कर देना. But in verse 17, it says that the midwives feared God. लेकिन 17वीं आयत में लिखा है कि वो दाइयां खुदा से डरती थी. And they feared God and did not do as the king of Egypt commanded them, but saved the male children alive. सो उन्होंने मिस्र के बादशाह का हुक्म ना माना, बल्कि लड़कों को जीता छोड़ देती थी. And I think this is important for us to think about in our lives as well. और मैं ये सोचता हूँ कि ये हमारे लिए भी बहुत जरूरी है कि डरते रहें. Whom do I fear? कि हम किससे डरते हैं. Am I fearing God? क्या मैं खुदा से डरता हूँ, Or am I fearing man? और क्या मैं आदमी से डरता हूँ, Or am I fearing a government? और क्या मैं हुकूमत से डरता हूँ, Or a culture or a society? और अपनी तहजीब से और अपने माशरे से डरता हूँ. And where do those things rank in my life? और ये सारी चीजों का क्या मुकाम है मेरी जिंदगी में. And we see the midwives here, they had a fear of God और हम देखते हैं कि ये दाइयां जो थी, इनके दिल में खुदा का डर था, that was more important to them than their fear of the most powerful person in the world at this time. और उनके दिल में दुनिया का जो ताकतवर जो शख्सियत है उसका डर था. The Pharaoh was somebody who could say the word and they would not be killed. फ़िरौन एक ऐसा आदमी था कि जो जिसने उनको हुक्म दिया था, लेकिन उन्होंने उसका हुक्म नहीं माना. But they feared God. लेकिन वो खुदा से डरती थी इसलिए. So continuing on in this little narrative that's here, this little story, और इस जो मुख्तसर सी कहानी है जो इसको आगे बढ़ाते हुए, the Pharaoh is asking the midwives, why are you saving the male children alive? बादशाह जब उनसे दाइयों से पूछता है कि तुमने क्यों लड़कों को जिंदा छोड़ दिया. And they say the Hebrew women in verse 19, that Hebrew women are not like Egyptian women, for they are lively and give birth before the midwives are able to come to them. 19वीं आयत, दाइयों ने फराउन से कहा कि इब्रानी औरतें मिस्री औरतों की तरह नहीं है, वो ऐसी मजबूत होती हैं कि दाइयों के पहुंचने से पहले ही जनकर फारिग हो जाती हैं. So it's not that they were just fearing God and weren't like having any type of attack or that the Pharaoh wasn't questioning them at all. ऐसी बात नहीं थी कि वो सिर्फ खुदा से डर रही थी, बल्कि जो कुछ फराउन उनसे सवाल कर रहा था उसका भी सामना कर रही थी. But their fear of God was challenged directly by the Pharaoh. और उनके दिल के अंदर जो खौफ था वो डायरेक्टली फेरो की तरफ से उसका जो है वो चैलेंज किया गया. And I think in our faith as well, we can have this our fear of God challenged directly by people. और जब कभी हम खुदा से डरते हैं तो हमारा जो डर है, खौफ जो है खुदा का, उसको भी चैलेंज का सामना हो सकता है कई बार. And that may be more true and more real for you all than it is for me. और ये बहुत बड़ी हकीकत है आपके लिए और मेरे लिए भी. Where I make a decision to trust in God and believe in Him, क्या मैं खुदा पर यकीन रखूं और इस पर अपना सारा भरोसा रखूं, and people do not like that and they challenge me and they ask me why and they make it hard for me maybe to fear God. और लोगों को ये बात पसंद नहीं आती कि ये क्यों खुदा से डरता है, और फिर वो मेरी मुखालफत या मुझे चैलेंज करते हैं कि मैं क्यों खुदा से डरता हूँ. But it says later on here that in verse 21 और फिर 21वीं आयत में लिखा है that
the midwives, because the midwives feared God, he provided households for them. खरूज पहले की 21 और इस सबब से कि दाइयां खुदा से डरी उसने उनके घराने आबाद कर दिए. He provided for the midwives. They feared him, and they feared God, and they withstood the challenge of the Pharaoh, and God provided for them. दाइयां जो थी वो खुदा से डरी थी, ठीक है, उन्होंने इसराइल की मदद की थी और फिरौन का मुकाबला किया, उसके चैलेंज को लिया, तो खुदावंद ने उनके घरों को आबाद कर दिया. Now, I don't know the details of exactly what that means as far as God providing a household for them. मेरे पास कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसका क्या मतलब है कि खुदा ने उनके घरों को आबाद कर दिया, कि इस लफ्ज का या इस आयत का क्या मतलब है. It doesn't list God did this and this and this and this. ये यहाँ पर बताया नहीं गया कि खुदा ने उनके लिए ये किया, ये किया, ये किया. But it says that God provided for them. बल्कि यहाँ पर लिखा है कि खुदा ने उनके घर आबाद कर दिए और उनके लिए मुहैया किया. God, they feared God, and it was accounted to them for righteousness, as we see in the New Testament. जैसा कि नए अदम में लिखा है कि वो खुदा के खौफ में रहे और यही उनके लिए रास्तबाजी जो है वो गिना गया, वो ईमान So लाए. So the Pharaoh makes an even more harsh command. यहाँ तक कि फराउन ने और भी ज्यादा जो तकलीफदा थे हुक्म सादिर फरमाए उनके लिए. He says, not just the Israelite people, but the Egyptian people. न सिर्फ के इसराइली बल्कि मिस्री लोग जो हैं. It says he commanded all his people that every son who is born should be thrown into the river. उसने कहा कि जो लड़के पैदा होंगे वो फेंक दिए जाएंगे. So he is the doubling down. He is enhancing this command that he had from before. और वो जो हुक्म उसने पहले फरमाया था उसको बड़ा लंबा वसी कर रहा था, उसमें और सख्तियां कर रहा था. And it's interesting because the midwives fear God and they disobey his command. And now instead of, talking to them or discussing it with them, he says, no, we're going to kill all the baby boys that are born. अब वो दाइयों से बात कर रहा था, वो कहता कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, अब जितने भी लड़के पैदा होंगे हम उनको कत्ल कर देंगे. So I think this is a picture of the way that those government or people who have power can be kind of blinded by their own ideas and ways of thinking. कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे पास इख्तियार होता है तो हम अपने जो हमारे मंसूबे होते हैं उन्होंने हमें अंधा और पागल किया होता है, हमें समझ नहीं लग रही होती कि हमने क्या करना है. This Pharaoh is worried about his kingdom, about himself, and about what is going to happen to him. फराउन जो था उस वक्त वो सिर्फ अपनी बादशाहत, अपनी हुकूमत और अपनी रियासत के बारे में सोच रहा था कि उसके बारे में क्या होगा. And we have seen and we can see that in our governments and in the cultures and society today. और यही बात आज हम अपने कल्चर में, अपने माशरे में और अपनी गवर्नमेंट में देखते हैं कि ऐसे ही हो रहा है, सबको अपनी अपनी पड़ी है. People may make governments may make a command or make a law, and they aren't willing to reconsider or change because they've already made that law and they don't want to go back. हुकूमतें जो हैं वो अपनी मर्जी से लॉ और कानून को जो है वो बनाती हैं और फिर परेशानी हमें हमें उनको मानना पड़ता है. Because people will think that they are not strong, that they are weak, or whatever the case is. क्योंकि लोग जो है वो ये समझते हैं कि वो कमजोर हैं और वो ऐसा नहीं कर सकते. But as we know in trusting and following God, that when I am weak, then He is strong. लेकिन याद रखिए कि जब कभी हम मसीह में कमजोर होते हैं, जब कभी हम कमजोर हो जाते हैं जिंदगी में, तो हम मसीह में जोरावर हो जाते हैं. So in the midst of this command of Pharaoh, we see someone come that will grow, that God will use. तो इस सारे हालात में फराउन ने जो सादिर फरमाए थे और सारी मुसीबतें और सख्तियां उस कौम के लिए रखी थी, इन हालात में खुदा एक बच्चे को पैदा करता है, उसको जन्म देता है. We see that maybe in this moment, what Pharaoh meant for evil by trying to kill all the Hebrew boys, God meant for good in order to bring up this one that will lead the Israelites out of Egypt.
फराउन जो है वो उनके लिए बुराई पैदा कर रहा है, लेकिन खुदा उस बुराई में से अच्छाई पैदा कर रहा है, एक इब्रानी लड़के को पैदा करके। So we have a woman who is pregnant with a child, and she gives birth to a son. और यहाँ पर हम एक ऐसी औरत देखते हैं जो कि हामला है और एक बेटे को जन्म देती है। And because of the command of Pharaoh that all the boys should be killed, she keeps him in hiding for 3 months. और क्योंकि फिरौन ने ये हुक्म सादिर किया कि लड़के मार दिए जाएंगे, और वो 3 महीने तक अपने उस लड़के को छुपा कर रखती है। But now that he is 3 months old, it's more difficult for her to hide him, so she decides to do something with him. जो ही 3 महीने गुजर जाते हैं, वो उसके लिए और मुश्किल होता जा रहा था, तब उसने फैसला किया कि इसको किस तरह से संभाला जाए। She makes a small ark for the baby and she puts him into the river. उसने एक छोटी सी हमारी बाइबल में तो टोकरी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो ये कह रहे हैं तो लिखा है कि आर्क, एक छोटी सी कश्ती नुमा कुछ चीज बनाई। And I don't think that this use of the word ark is by mistake. और मैं ये समझता हूँ कि ये लफ्ज जो आर्क यहाँ पर कश्ती इस्तेमाल हुआ है, ये ऐसे नहीं हो गया। It is likely that it's pointing back or referencing the ark that delivered Noah and his family from the destruction और मैं of ये the flood. सोचता हूँ कि ये जो कश्ती थी छोटी सी जिसमें मूसा को डाल दिया गया था, ये पीछे नूह की जो स्टोरी थी और उसके खानदान की, उसको बयान कर रही थी। So the baby is placed into the ark and put into the river. और अब उस छोटे लड़के को उसमें डाल दिया गया है और उसको दरिया में छोड़ दिया गया है। And the mother has a daughter who she asks to watch the ark to make sure that everything is okay with the baby. और माँ जो है वो अपनी बेटी को कहती है कि इसका ध्यान रखना कि ये ठीक तरह से जो है काम करे। Or to see what would happen with the baby in the ark और as फिर it went in the river. और फिर हम देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है जब उसको दरिया में छोड़ दिया जाता है। So the baby goes in the river and Pharaoh's daughter discovers the ark. जो कश्ती होती है उसको दरिया में छोड़ दिया जाता है और फेरो की जो लड़की होती है वो उसको देख लेती है। She sends one of her servants to go to get the ark, and she realizes there's a baby in there, and the baby is a Israelite baby. वो अपने मुलाजमों को भेजती है और उसको निकाल लेती है और देखते हैं कि इब्रानी इसराइलियों का लड़का है। And the sister of the baby says, I know that someone who can nurse this baby, a Jewish woman who can nurse this baby. और वो लड़की जो है वो कहती है कि मुझे एक ऐसी औरत का पता है जो कि इस लड़के की परवरिश कर सकती है, उसको दूध पिला सकती है। And she calls the baby's mother, and the baby's mother comes and becomes the nurse for Pharaoh's daughter. उसी लड़के की माँ को बुला कर लाती है जिसने उसको जन्म दिया होता है, और वो उसकी देखभाल और उसको दूध पिलाती है फिर। So I can just imagine what the mother's mentality, what her thoughts would be in this whole story. तो मैं ये सोचता हूँ कि एक माँ की क्या उस वक्त जो है वो ज़हनी कैफियत होगी, या क्या उसके एहसासात होंगे इस सारे हालात में। I have a baby, it's a beautiful boy, and I'm supposed to throw him in the river by the command of the Pharaoh. यानी कि मेरे पास एक खूबसूरत बेटा है, और क्योंकि फराउन ने हुक्म दिया है कि इनको फेंक देना है, मार देना है, तो अब मैंने उसको मजबूरन दरिया में छोड़ दिया है। But I fear God, and I'm going to hide him as long as I can and keep him with me as long as I can. लेकिन मैं चूंकि खुदा से डरती हूँ, इसको मारूंगी नहीं, जब तक मैं इसको छुपाऊंगी, मैं छुपा कर रखूंगी। And now he is too old for me to hide, and I have to do something, and I hope that, and I trust that God will take care of him when I put him in this ark. अब काफी वक्त हो गया कि मैं इसको और ज्यादा नहीं छुपा सकती, और मैं खुदा पर यकीन रखती हूँ, और मैं अब इसको इस कश्ती में डाल दूंगी। And she places him in the river. She's obeying, in a sense, the command of Pharaoh by placing the baby in the river, albeit with an ark underneath him. और वो फेरो के हुक्म को भी मान रही थी कि लड़के को दरिया में उसने फेंक दिया था। But I can just imagine what it was like for her to put her baby that she loves and she cares about in this river. लेकिन एक माँ के लिए किस कदर मुश्किल होती है कि एक बेटे को, अपने बेटे को दरिया में फेंक देना ऐसे ही। And she's trusting God that he will do and it will cover him as he is, kind of helpless at that point.
और वो मुकम्मल तौर पर खुदा पर भरोसा रखती थी, ईमान रखती थी कि खुदावंद इसको जरूर बचा लेगा। So the baby is taken in by Pharaoh's daughter, and he is raised by Pharaoh's daughter. और वो लड़का जो है वो फराउन की बेटी जो है उसकी परवरिश करती है, वो उसको पालती है। But his mother, his true mother, is able to nurse him and to be involved in his लेकिन upbringing उसकी as जो well. हकीकी माँ थी वही उसकी परवरिश करने के लिए उसको मंगवा लिया जाता है। So in Genesis, I'm sorry, I keep saying Genesis. In Exodus chapter 2, खरूज उसके दूसरे बाब में we see in verse 11 that this baby grows up, and the baby's name is Moses. ये लड़का जो है बड़ा होता है और उसका नाम मूसा है। And that's the Pharaoh's daughter names him that because the name means from the water. फराउन की बेटी ने उसको ये नाम दिया क्योंकि ये पानी से निकाला गया था, इसलिए इसके नाम का भी मतलब ये है कि पानी से निकाला गया। So he grows up, and I think it's important for us to think about what it would be like for Moses. तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम देखें कि ये मूसा जो था कैसा होने वाला था, या उसकी माँ ने वो किसकी तरह था वो। He is a Jewish man now वो एक यहूदी आदमी था who was raised by an Egyptian family in the Pharaoh's house. फराउन के हाउस में एक मिस्री खानदान ने उसकी परवरिश की। So he is living in two worlds at the same time. सो वो एक ही वक्त में दो दो तरह के मुख्तलिफ दुनिया में रह रहा था, जमानों में रह रहा था। He is Jewish by blood, वो खूनी लिहाज से तो यहूदी था, but he is Egyptian by upbringing and by the way he was raised. लेकिन जिस तरह से उसकी परवरिश हुई थी वो एक मिस्री था। वाओ। And I think this is something that is a challenge for him, especially at this point in his life when he becomes a man. जब वो जवान होता है तो यही बात उसके लिए मुश्किल साबित हुई कि वो क्या करे। He's having a type of identity crisis, maybe, with who am I really? तो हो सकता है कि वो सोचता हो कि वो कौन है, मसीह में उसकी क्या अहमियत है। Am I Jewish or am I Egyptian? क्या मैं यहूदी हूँ, क्या मैं मिस्री हूँ? Which group do I belong to? मैं किस ग्रुप से ताल्लुक रखता हूँ? And we see this maybe in the next few verses, what impact this has on him. और ये हम देखते हैं कि इन्हीं सारी बातों ने उसके ऊपर क्या क्या असर छोड़ा और फिर क्या होता है। So Moses is grown, and he is still part of Pharaoh's household. ये लड़का जो है मूसा जो है वो जवान होता है और अभी वो फराउन के घर में ही रह रहा है। And he sees an Egyptian beating a Hebrew, like वो a Hebrew slave. वो ये देखता है कि एक मिस्री जो है वो अबरानी गुलाम को जो है वो मार रहा है। He sees the burden that the Hebrew is bearing, or the tasks that they have to perform. वो ये सब कुछ देख रहा था कि अबरानियों को किस तरह के जुल्म और किस कदर सख्त मेहनत जो है वो करनी पड़ती है। And the Egyptian is beating the Hebrew slave, and Moses decides to do something about that. मूसा सोचता है कि ये जो मिस्री बंदा है इब्रानी गुलामों को मार रहा है, तो उसके बाद इसका क्या सद्देबाब किया जाए। He takes matters into his own hands, and he kills the Egyptian. और वो लड़ाई जो है वो अपने सर ले लेता है और उस मिस्री को मार देता है। So at this point, he is feeling more Jewish, I would assume, than Egyptian. तो अब वो ज्यादातर अपने आप को यहूदी फील कर रहा है इसकी बजाय कि वो अपने आप को मिस्री कहलवाए। He says, I will protect my brother, my blood brother, and I will kill the Egyptian, and I will bury him in the sand. वो ये कहता है कि मैंने अपने यहूदी भाई का साथ दिया है और मैंने मिस्री को मार दिया है और अब उसको दफन भी कर दिया। But it's funny, in Exodus 2, verse 12, it says that he looked this way and he looked that way before he killed the Egyptian. 2:12 फिर उसने इधर उधर निगाह की और जब देखा कि वहां कोई दूसरा आदमी नहीं है तो उस मिस्री को जान से मारकर उसे रेत में छिपा दिया। So maybe he wasn't so confident with what he was doing, right? He's looking to see if anybody's watching me. तो वो इधर उधर देख रहा था कि कोई वेदा तो नहीं पिया। तो So he hides the Egyptian in the sand. और उसने उस मिस्री को रेत में छिपा दिया। And then the next day he goes out to see his Hebrew brothers and sisters, Hebrew brothers fighting.
जब वो दूसरे दिन जाता है तो देखता है कि इब्रानी आपस में लड़ रहे हैं, and he asks them, "Why are you fighting with one another? Why are you hitting one another?" और वो उनसे पूछता है क्यों एक दूसरे के साथ तुम लड़ रहे हो, क्यों लड़ाई कर रहे हो आपस में। And they directly ask him, they challenge him with their questions. और फिर जब वो उनसे पूछता है तो उनसे कहते हैं कि वो से उनसे सवाल करते हैं, इब्रानी लोग उससे सवाल करते हैं। In verse 14 of Exodus 2, they say, "Who made you judge over this? Do you intend to kill me as you killed the Egyptian?" 14वीं आयत में उसने कहा तुझे किसने हम पर हुक्म या मुंसिफ मुकर्रर किया, क्या जिस तरह तूने उस मिस्री को मार डाला मुझे भी मार डालना चाहता है। So, and Moses, he fears, okay, people know that I have killed an Egyptian. मूसा ये सोचता कि अब लोगों को पता चल गया कि मैंने एक मिस्री को मार डाला है। And based on these questions and their interaction with Moses, it doesn't seem like there's a brotherhood that exists between the two of them, between them. ये सवाल को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि इब्रानियों के दरमियान भाईचारा था और मूसा और इब्रानियों के दरमियान कोई अच्छा भाईचारा था। My Jewish brothers that I tried to protect, they don't appreciate what I did, and now I killed an Egyptian, so the Egyptians are going to be mad at me as well. और मैंने अपने यहूदी भाइयों की खातिर एक मिस्री को मार डाला और ये इब्रानी है कि मेरा साथ नहीं दे रहे और अब मिस्री लोग मुझे क्या कहेंगे। So Moses flees. तो फिर वहां से वो भाग जाता है, He goes to the wilderness. और वो जंगल में चले जाता है, And he went to a place called Midian. और वो मैदान में चले जाता है। And he is, I think, in the midst of this identity crisis even more now that he has left Egypt. और अब उसने मिस्र को जो है वो छोड़ दिया है। And maybe he is trying to forget about Egypt by fleeing. हो सकता है कि वो वहां से इसलिए भागा था ताकि वो मिस्र की सारी उन चीजों को, तहजीब को, सारी सोचों को भुला देना चाहता हो। He wants to have a fresh start somewhere where nobody knows who he is or what he has done. वो अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना चाहता था जहां पर से कोई ना जानता हो और पुरानी सोचे उसका पीछा ना कर सके। And I think we can do the same thing sometimes in our lives. We feel guilty, we feel fearful or ashamed, and we just want to get away and forget about what happened before. कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है जब परेशानी और शर्मिंदगी, गुनाह हमारी जिंदगी में आ जाता है, तो कई बार ऐसा होता है कि अच्छा होता है कि हम उस जगह को छोड़ दें। But I think this is different than what we do in what Christ in the work that Christ did for us. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ हम करते हैं वो जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। I can go away and I can try to ignore and try to forget what happened. मैं किसी दूसरी जगह पर जा सकता हूँ और मैं भूल सकता हूँ कि क्या हुआ था, But there will always be that thing maybe far in my mind that's still there. That thing is still there. लेकिन दूर कहीं हमारे ख्यालातों में हो सकता है कि वो चीज जो है किसी हमारे दिमाग में बैठी हुई हो। Until I bring that thing to the cross, that thing will always be there. But when I bring it to the cross, it's taken care of. लेकिन जब कभी हम उस ख्याल को यीशु मसीह की सलीब के पास ले आते हैं तो वो ख्याल निकल जाता है। And we'll see that happen for Moses in a little bit. तो हम देखते हैं कि यही चीज जो है वो मूसा के साथ होती है। So Moses has fled to the land of Midian, to the wilderness. और मूसा जो है वो मदियान की सरजमीन में भाग जाता है। And he goes to a well where some shepherds are watering their flocks. और वो एक कुएं के पास जाता है जहाँ पर कुछ चरवाहे अपने उस गल्ला को पानी पिला रहे होते हैं। And he meets a group of Midianite women. और वो मदियानी औरतों से मिलता है। And he helps them, delivers them from some other shepherds who are trying to harm them. और वो उनको बचाता है कुछ ऐसे चरवाहों से जो उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। And Moses helps draw water for these women. और वो मदद करता है एक औरत की पानी भरने में। And eventually Moses actually marries one of those women, becomes his wife, Zipporah. और फिर मूसा जो है उनमें से एक वो लड़की जिसने उसकी मदद की होती है उससे शादी कर लेता है और वो उसकी बीवी बन जाती है। And Moses finds a place in this
community, this the family of Jethro, in the land of Midian. और फिर यत्रो के उस खानदान में वो सफूरा से शादी करने के बाद जो है अपना एक मुकाम बना लेता है इस माशरे में. So Moses is now starting his new life, this new identity that he has as a deliverer and as part of this new family. और अभी मूसा जो है वो अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करता है, नया आगाज करता है. But God will do something to him to help him really see his true identity. लेकिन खुदा उसकी मदद करता है ताकि वो अपने आप को ज्यादा तौर पर पहचाने कि वो किस लिए पैदा किया गया है. Yeah, it's interesting because Moses is part of this new family, right? He's part of Jethro's family now. अभी मूसा जो है वो यत्रो के खानदान का हिस्सा है, उनका एक नया मेंबर है. But in Exodus 2:22, he names his son Gershom. और वो अपने एक बेटे का नाम जरसूम रखता है. And the name Gershom means I have been a stranger कि मैं तो अजनबी था in a foreign land. अजनबी मुल्क में मैं तो मुसाफिर था, इसका मतलब है. So this new family that Moses is part of is not making him forget that he has no, or feels like he has no place. अभी उसने अपने इस बेटे का नाम जरसूम रखा है कि मैं अभी इस मुल्क में मुसाफिर हूँ, और ये बात उसके ज़हन से नहीं निकल रही. So now Moses is part of this family, and he is a shepherd, and he is leading his flock in the wilderness, in the desert. अभी मूसा जो है वो इस खानदान का हिस्सा है और वो चरवाहा है, और वो अपनी भेड़ बकरियां जो है वो चरा रहा है. And he sees a flame, a bush burning, and the bush is not consumed. और अभी वो एक झाड़ी जो है वो देख रहा है कि उसमें आग जल रही है, और वो जो झाड़ी है वो मुकम्मल तौर पर जो भस्म नहीं हो रही. The fire is just burning and burning, and he is wondering why, and he goes and he looks to see why. वो देखता है कि ऐसा क्यों है, सिर्फ आग जल रही है लेकिन वो झाड़ी जो है वो भस्म नहीं हो रही, खत्म नहीं हो रही. And God speaks to him. और फिर खुदा उसके साथ बोलता है. And from the bush, God calls him by name. He says, Moses, Moses. और फिर उस झाड़ी में से आवाज आती है, मूसा मूसा. And he says, here I am. और फिर वो कहता है, मैं हाजिर हूँ. And this is something that I think we may be familiar with, this interaction between Moses and God. मैं ही सोचता कि हो सकता है आपको इस वाक्य का पता हो, खुदा और मूसा की जो मुलाकात होती है. But God says, do not draw near, do not come near this place, take your sandals off, for the place where you stand is holy ground. और खुदा उससे कहता है कि अपने जूते उतार दे, क्योंकि जिस जगह पर तू खड़ा है ये पाक है, मेरे नजदीक मत आना अभी. And this is the first interaction between Moses and God, but I think it points to the intimacy that Moses will have with God throughout his entire life. ये पहला वाकया था जो खुदा और मूसा के दरमियान बात हुई, लेकिन ये एक पहला राब्ता था जो कि हुआ, और इसके बाद दूसरे राब्ते जो है मुसलसल फिर खुदा और मूसा की मुलाकात होती रही. And there's a few different things. God called him by his name, Moses. और फिर सबसे अच्छी बात यह है कि खुदा मूसा को उसके नाम से बुलाता है, मूसा. So Moses may not have known who he was, but God knew who he was. मूसा को नहीं पता था कि वो कौन है, लेकिन खुदा को पता था कि मूसा कौन है. And God speaks to him, and Moses hides his face from God. और फिर खुदा मूसा के साथ बोलता है, और मूसा ने अपना चेहरा जो है वो छुपा लिया है. Right? God called him by name, and maybe he was embarrassed, maybe he was ashamed, and he hid his face from God. खुदा उसको बनाम बुलाता है और वो अपना चेहरा छुपा लेता है, तो मे भी हो सकता है कि वो किसी बात से शर्मिंदा हो. And this points back to Genesis, when God was calling for Adam and Eve, and they were hiding themselves from God. तो ये बात जो है हमें पीछे की तरफ लेकर जाती है, आदम और हवा की तरफ. जब खुदा ने पुकार रहा था आदम और हवा को, तो वो भी छिप रहे थे, डर रहे थे वो भी. So God speaks to Moses, and he tells him of his plan to deliver the Israelites out of Egypt. खुदा मूसा के साथ बात करता है और उसको बताता है कि मैं इस्राएल को छुड़ाऊंगा मिस्र की गुलामी से. God says, I have heard the groanings and the cries of my children, and I will deliver them. मैंने अपने लोगों का रोना और चीखना चिल्लाना जो है वो सुना है, और मैं उनको वहां से रहा करूंगा.
and I will bring them from out of Egypt into a land flowing with milk and honey. मैं उनको मिस्र से निकाल लाऊंगा और दूध और शहद जहाँ पर बहता है उस मुल्क में ले जाऊंगा. And he says, I am going to use you, Moses, in order to deliver these people. और खुदा उससे कहता है मूसा मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा ताकि तू मेरे लोगों को वहां से निकाल लाए. So God made a promise with Abraham in Genesis chapter 15. और खुदा इब्राहिम के साथ 15वें बाब में पैदाइश में एक वादा बांधता है, where he, cut the animals in half and God walked through the animals. वो जहाँ पर वो जानवरों का आधा काटता है और खुदा उसमें से गुजरता है. And he said, your descendants will be as the stars in the heavens, and you will have a land where you will grow and become a great nation. और फिर खुदा उससे कहता है कि तेरी जो नस्ल है वो आसमान के तारों की मानी होगी और बड़ी कौम होगी वो. And this is God continuing and showing that he will fulfill that promise that he had made. और अब ये वक्त आ गया था कि खुदा उस पर जाहिर कर रहा था कि अभी वो वक्त है कि ये जो वादा था ये पूरा होने को है. And Moses asks, God says, I will use you, Moses, to deliver them. और खुदा मूसा को कहता है कि मूसा मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा ताकि तू इन लोगों को छुड़ा लाए. And Moses says, who am I to go to Pharaoh and to ask for deliverance of the Israelites, of Israel? मूसा खुदा से कहता है कि मैं कौन होता हूँ कि मैं फ़िरौन के पास जाऊं और उसे कहूं कि इस्राएल के लोगों को जाने दे. And Moses and God says, I will be with you. और खुदा उसे कहता है कि मैं तेरे साथ रहूंगा. I will be with you. मैं तेरे साथ रहूंगा. So Moses is now maybe realizing that it's not all about him. अभी मूसा जो है वो सोच रहा है कि ये सब कुछ उसके बारे में ही नहीं था. It's not all about who he is. और ना ही ये कि जो कुछ भी उसके पास है उससे मुतालिक थी ये बात. But it's about who is with him. बल्कि ये उसके मुतालिक थी कि जो उसके साथ था. And Moses wants some further clarification from God. और मूसा कुछ और वजाहती तौर पर खुदा के साथ क्लियर कट बात करना चाहता था. And he says, who will I say sent me to deliver the Israelites? मैं क्या कहूंगा वहां पर जाकर के मुझे किसने भेजा है कि इस्राएल को जाने दो यहाँ से. And this is where God gives another name that God gives himself. और खुदा ने अपने आप को वहां पर एक और दूसरा नाम दिया. In Genesis, I keep saying Exodus 3:14. Exodus 3:14 13 की 3:14. Yeah. He says, you will say, I am who I am. खुदावंद ने मूसा से कहा मैं जो हूँ सो मैं हूँ. You will say, thus you shall say to the children of Israel, I am has sent me to you. So तो बनी इस्राएल से यूँ कहना कि मैं जो हूँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है. And in the Hebrew, the letters for this name I am is YWH. और I am के लिए यानी मैं हूँ के लिए जो इब्रानी लफ्ज है, is it what? YW, like Yahweh, the YWH, yeah. YWAH, Yahweh, यानी मैं हूँ के लिए जो लफ्ज है. So he says, tell them that Yahweh has sent you. तो उनको बताना कि यावे ने हमें भेजा है. So this is something that I think God was very personal in this interaction with Moses. यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा मूसा के साथ जाती तौर पर उससे मिलता है. It was personal, but I think God made it personal because of how important it is. क्योंकि ये खुदा के नजदीक बहुत अहम बात थी, इसलिए उसने मूसा के साथ शख्सी तौर पर बात की. And God is speaking directly to him, calling him by name. और खुदा डायरेक्ट उसके साथ बात कर रहा है और उसका नाम लेकर उसे पुकार रहा है. And then God is calling himself. He says, I am. और फिर खुदा कह रहा है मैं जो हूँ. So that Moses will know who is with him. तो ताकि मूसा जान ले कि कौन उसके साथ है. And Moses will know that his identity is based in who is with him, which is the I am. ताकि मूसा जान ले कि उसकी पहचान जो है मैं जो हूँ के साथ है. And I think also the fact that he says I am. और एक दूसरी बात जो है मैं जो हूँ के बारे में.
not I was or I will be. वो ये नहीं है कि मैं था और मैं हूँगा. It talks about a moment, a present existence. The present God is present in that moment, in every moment. खुदा जो है वो हर जगह में, हर ज़माने में मौजूद है, यानी मैं हूँ. Like we say that God is eternal. जैसे कि हम कहते हैं कि खुदा अबदी है. He is in every moment, he is there as present as possible in every moment. और वो हर जगह पर, हर ज़माने पर यके वक्त मौजूद है. And that is something that Moses obviously needed to hear. और यही वो बात थी जो कि मैं समझता हूँ कि मूसा को ज़रूरी था कि वो अपने कानों से ये बात सुनता, ताकि उसे पता हो कि कौन उसके साथ बात कर रहा है, कौन उसे भेज So रहा है. God tells Moses to go and deliver the Israelites, but he says, I will be with you, and he says that I will help you. खुदा जो है वो मूसा को भेजता है कि जाए और इस्राएलियों को छुड़ाए, और मैं तेरे साथ रहूंगा और मैं तेरी रहनुमाई करूंगा. And he says in the rest of chapter 3, he explains, basically tells Moses what will happen. और फिर वो तीसरे बाब में मूसा को बताता है कि क्या होगा, कैसे होगा. Right, you will go to Pharaoh and he will probably not let you go, but I will stretch out my hand and will help you. हो सकता है कि तू फैरो के पास जाए और वो तुझे जाने ना दे, तो फिर मैं अपना हाथ उस पर बढ़ाऊंगा. I will do wonders in your midst. I basically saying I will do the plagues will happen. I will deliver you. I will hold you, and then he will let you go. मैं अपना हाथ तुझ पर बढ़ाऊंगा और उसका दिल को सख्त कर दूंगा और मुसीबतों को पैदा कर दूंगा, ताकि वो तुझे जाने दे. Excuse me. And God is being clear with what he is saying to Moses in this time. और खुदा बड़ा वाज़िया उसे बता रहा था जो कुछ वो मूसा के साथ बात कर रहा था. And I don't think we have time to go into the details of chapter 4, but God gives some confirmations to Moses of his power. और फिर हम देखते हैं कि चौथे बात में कुछ कंफर्मेशन थी जो कि खुदा मूसा को देता है. Of with the rod that he asks Moses to carry. एक आसा जो था खुदा ने उसे कहा कि लेकर जाना. And then also with his hand being leprous and then being saved, being restored. और फिर वो जो जिस हाथ को वो कोड़ हो जाता है, ठीक है, वो ठीक कर वो मौजज़ा. So God is asking Moses to do this great thing. और खुदा जो है मूसा को कहता है कि इस तरह के हैरत अंगेज काम कर. And something that maybe could have overwhelmed or been too much for Moses. और कुछ ऐसा जो कि उसको बड़ा एक जो शीला जो है उसके अंदर जज्बा भर दे. But first he speaks to him and helps him understand who he is. लेकिन पहले उसने मूसा की मदद की ताकि वो उसको खुदा को जाने कि वो कौन है, कौन उसे भेज रहा है. And then he makes sure Moses knows who is with him. और फिर उसने ये भी मूसा को बताया कि कौन उसके साथ है, यानी वो काम, वो मौजज़े जो हुए उसके वसीला से उसने बताया कि मैं तेरे साथ हूँ. So I think this is something that we can learn in our lives, is who I am is based on who God is. और हम आज यही सीख सकते हैं कि खुदा कौन है इस कहानी से. And everything that I do, God is with me. और जो कुछ भी हम कर रहे हैं खुदा उसमें हमारे साथ है. And he is able to do all things. और वो सब कुछ करने पर कादिर है. So I think this is an encouragement for us. मैं ही समझता हूँ कि ये हमारे लिए बड़ी इत्मीनान और तसल्ली की बात है. Yes, amen. And hopefully it's an encouragement for all of you. ये हम सब के लिए बाइस बरकत है. Amen. Amen. Praise the Lord. Yeah. Right. Thank you. Praise the Lord.